Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें रेडियो एक्टिविटी ए विषय रे पढिबा ऑलरेडी तमे या विषय रे प्लस 2 रे भी पढिछो देखो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जदि देखिबा रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली एक्सीडेंटली डिस्कवर करथिले जने साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल इन द ईयर 1896 से देखिले जे गोटे मटेरियल यूरानियम सॉल्ट व्हिच इज या को जदि हमें केमिकली कहबा यूरानाइल पोटेशियम सल्फेट इट इज फाउंड टू एमिट रेडिएशन इवन इन द डार्क रूम गोटे डार्क रूम रे भी देखा गला जे एथरो रेडिएशन बाहरुची स्पॉन्टेनियसली एंड द एमिटेड रेडिएशन एक्चुअली वाज एबल टू पेनिट्रेट द ब्लैक पेपर रैपिंग ओके ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट रो ब्लैक पेपर रे रैप करथिले भी ताकू से रेडिएशन पेनिट्रेट कर जाउची माने सेति की तारो पावर थिला सो दिस रेडिएशन affect the photographic plate and he performed a series of experiments using a light tight box inside which the uranium salt is kept and a photographic plate were arranged either in contact with or separated by thin sheets of aluminum okay ताकू लगे की रखो किंबा टिके छाड़ी की रखो जो फोटोग्राफिक प्लेट को along with thin sheets of aluminum so जो results बाहरला एथरू क्लियरली सेथरू जणा गला जे रेडिएशन जोटा बाहरुची यूरानियम सॉल्ट रो इट इज affecting the photographic plate and the observation in this respect will lead Becquerel to the conclusion that uranium was emitting a special kind of rays okay गोटे विशेष रेज जोटा से बाहर करथिला आ से रे गुड़ाकू बा रश्मि गुड़ाकू से तांको ना रे बेक्वेरेल रेज कहगला ओके एंड द यूरानियम सॉल्ट एमिटेड द रेज एज आई सेड स्पॉन्टेनियसली माने स्वतःस्फूर्त भाव रे okay and this phenomenon of spontaneous emission of radiation by the heavy elements मन रखो यूरानियम गोटे heavy element कहा को कहबा जार mass number atomic mass number is greater than 210 रहितबो okay so ei phenomenon को हमें कहबा कोन ना रेडियो एक्टिविटी okay now after Becquerel's discovery a very famous scientist जे कि जने फिजिक्स रो आ केमिस्ट्री रो भी तांकर बहुत अवदान अछि नोबेल प्राइज तांको मिलिथिला मैडम क्यूरी मैरी क्यूरी तांको सहित तांको हस्बैंड पियरी क्यूरी okay they started the work on radioactivity and they found that radiation for other radioactive elements are more stronger than that of from uranium and they discover the new radioactive elements like polonium having mass number 210 atomic number 84 similarly आ गोटे एलिमेंट बाहरला रेडियम जोटा तुम बहुत गुड़ा इंस्ट्रूमेंट्स रे देखो जोटा कि लाइट पड़ो तापर तुम लाइट ऑफ करदेल से रेडिएशन बाहर रेडियम विथ 88 to 126 द नंबर्स आर व्हिच वेर मोर रेडियोएक्टिव देन यूरानियम ओके हाउएवर गोटे जिनस ये कही रखुची से जो रेडिएशन रे दीर्घ समय पर्यंत काम करी करी एक्चुअली से माने जानी पारलेनी जे ए रेडिएशन टा हार्मफुल इफेक्ट्स देखौची बॉडी ऊपर तेणु सेथि पई मैरी क्यूरी कर डेथ भी हो जाइथिला ओके soon after the discovery of this phenomenon that is the radioactivity another scientist Ernst Rutherford started investigation of these radiation emitted by radioactive substance and he studied the measurement of intensity of the radioactive radiation okay तारो इंटेंसिटी को से मेजर करवा स्टार्ट कले
ओके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रू जोटा बाहर केमती मेजरमेंट कले बाय एब्जॉर्प्शन मेथड केमती बाय प्लेसिंग फॉइल्स ऑफ इंक्रीजिंग थिकनेस बिटवीन द रेडियो एक्टिव सोर्स एंड अ डिटेक्टर सो एथरू तुम गोटे जो फेमस एक्सपेरिमेंट देखी जानी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट which was done by scattering of alpha particles on the gold foil. Okay, अच्छा तो Rutherford showed that uranium emitted two kinds of rays. One of these was easily absorbed, which Rutherford named as alpha ray. The other was more penetrating, which is called the beta ray, and the later on the third type of ray was discovered, jahaku koila ame gamma ray, and it was discovered by French scientist P.V. Willett in the year 1900. এই গামা রে কিন্তু দেখাগলা যে यार penetrating power बहुत बेसी अच्छी as compared to alpha and beta ray. And as mentioned above, the radioactivity was also discovered in elements other than uranium, like भारत रे जो एलिमेंट मिलूची लाइक योर थोरियम ओके ता छड़ा जेमती हम ऊपर देखला गोटे एलिमेंट रेडियम जोटा कि मेरिक्यूरी बाहर करथिले ओके सो दीज आर द radioactive elements or radioactive substances. Now we can categorize this radioactivity into two. गोटे हला नेचुरल प्राकृतिक भाव रे radioactivity where this phenomenon is actually spontaneous emission of powerful radiation which is exhibited by heavier elements and it is found in nature. आ गोटे होची आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी ओके कृत्रिम भाव रे सो एई फेनोमेनन होची स्पॉन्टेनियस एमिशन हबो एथरे भी रेडिएशन फ्रॉम एलिमेंट्स मच लाइटर देन दोज ऑकरिंग इन नेचर and it is done by modern techniques of artificial transmutation of elements. Okay, अच्छा याको artificial by induced radioactivity मध्य हमें कही पारिबा. Moving further, now let us see what is the nature of radioactive radiation. Okay, so in general जेमती आम डिस्कस कला तीन प्रकार रेडिएशन बाहरुची फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस and it has been demonstrated by putting a small quantity of some radioactive material inside the bottom of a small hole which is drilled in a lead block which is placed inside an evacuated chamber. Okay, गोटे evacuated chamber भितर गोटे लेड ब्लॉक टे आमे नहीं गला एठी आ एठी स्मॉल कैविटी तयारी करछु ता भितर आमे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखी देला. ओके ताले एठी आमे कोन करछु फोटोग्राफिक प्लेट रखुछु ऊपरे. ओके फोटोग्राफिक प्लेट व्हिच इज प्लेस्ड upper side and at a short distance above the lead block and we are applying magnetic field. एटी देखो magnetic field जारे एटी गोटे क्रॉस सिंबल अछि that means एई magnetic field टा perpendicular to this plane of the paper or plane of the screen अछि. ओके बा एई जो क्रॉस मार्क देला ता माने एठी आमे कहि परबा तम मुह आडू स्क्रीन आडू को magnetic field रो डायरेक्शन अछि राइट. So it is applied right angle to the plane of the paper directed away from the reader as I said. Okay, so it is observed that the beam of radiation coming out of the hole splits into three parts as you can see in the figure. तीन प्रकार बीम आसिला गोटे एपटे जाउची गोटे याडे जाउची आ गोटे सीधा पळौची. ओके सो एठी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ये जिनस आम देखा पाइला. सिमिलरली जदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आम क्रिएट करूँ पॉजिटिव नेगेटिव भितर ताहले मध्य देख तीन प्रकार ही रेडिएशन बाहर गोटे तो सीधा पड़ेगा तापर गोटे पॉजिटिव आड़ को आकृष्ट होउची अट्रैक्ट होउची आ गोटे हला नेगेटिव आड़ को एटा अट्रैक्ट होउची. ओके सो द फर्स्ट पार्ट बेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट and it's called the alpha particle. Second part जोटा कि right आड़ को जाउची beta particle. जोटा third part जोटा straight जाउची as I said it is the gamma ray. Now by applying the Fleming's left hand rule it may be seen that alpha particle होउची positively, beta particle negatively और gamma particle हला neutrally charged माना uncharged. Okay, so the nature of charge carried out by these radiation can also be verified by applying electrostatic field जोटा कि होउची सेकंड फिगर जेमति कहले यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आम प्लेस कर रखुछु इन प्लेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखा गला अल्फा पार्टिकल जोटा पॉजिटिव चार्ज सो एटा नेगेटिव प्लेट आड़ को अट्रैक्ट हम बीटा पार्टिकल जोटा होउची एक्चुअली
नेगेटिवली चार्ज सो एटा पॉजिटिव प्लेट आड़ को अट्रैक्ट हेबो आ गामा पार्टिकल बा गामा रे जेहेतु न्यूट्रल एटा को आड़े भी अट्रैक्ट हेबो नहीं इट विल गो स्ट्रेट ओके किछि भी बेंडिंग एठी देखा जिवो नहीं right. So it may be mentioned here that no radiation or no radioactive element emits both alpha and beta particles simultaneously एका संगरे कौनसी radioactive element alpha beta particle को emit करे नहीं some substances emit alpha particles and some other emit beta particles while gamma rays are emitted along with both alpha and beta particles. So ऊपर जो हमें देखिला या नुह कि तीन टा जाक रेज एका संगे बाहर अलग अलग मेटेरियल अलग अलग अवस्था रे अल्फा पार्टिकल थोड़े बाहर थोड़े बीटा पार्टिकल बाहर थोड़े गामा पार्टिकल बाहर एमती भी पारे गामा पार्टिकलटा अल्फा और बीटा पार्टिकल सह बाहरी पारे ओके सो द रीजन फॉर रेडियोएक्टिव एमिशन being divided into three parts on applying electromagnetic field is that radioactive substances does not have a single element only but all those elements which are being formed by radioactive emission okay so ei sabu element ta guda radioactive emission द्वारा ही तार formation ହେଇଛି and in fact when alpha or beta particle is emitted from an atom of some element then that atom is converted into another atom of some new element okay and if an alpha particle is emitted by some atom then the new atom may be emitting a beta particle or again alpha particle okay थरे गोटे अल्फा पार्टिकल बाहरला आउ थरे पुनी बीटा पार्टिकल बाहरी पारे कि आउ थरे अल्फा पार्टिकल भी सेथिरु बाहरी पारे thus we can say both alpha and beta particles are obtained and gamma rays being emitted along with both type of particles okay अच्छा एबे आकु बढ़िबा let us now see the properties of nuclear radiation एटा very important एटा short question भी आसी पारे properties गुडा अल्फा रे बीटा रे आउ गामा रे रो प्रथमे हला अल्फा रे ओके अल्फा रे कहले हम बुझिबा एटा होची गुडे डबली चार्ज्ड helium nucleus which is consisting of 2 protons and 2 neutrons velocity होची ranging from 1.4 into 10 to the power 7 meter per second to 2.05 into 10 to the power 7 meter per second then they are deflected by electromagnetic fields then alpha particles actually produce fluorescence in substances like zinc sulfide and barium platinocyanide okay तापरे next point रे कहूची they are massive particles and hence easily can be stopped by an aluminum sheet गोटे aluminum sheet आमे यूज करिकी भी अल्फा पार्टिकल को अटके परिबा of only 0.02 mm thickness or even by ordinary sheet of paper गोटे पेपर गोटे भी लगे गोटे तुम खातार पेपर यूज करिकी भी तुम अल्फा पार्टिकल को अटके पारिबो पेनिट्रेट करि पारिबो नाही ओके काहे कि बिकॉज एटा होची मैसिव पार्टिकल देन नेक्स्ट पॉइंट रे they have great ionizing power and each alpha particle produces thousands of ion pairs in a gas before being absorbed then they get scattered while passing through this metal foil and affected by photographic plate जेमते हम ऊपर देखुतला फिगर रे they can produce artificial radioactivity in certain elements and can produce nuclear reaction our range जदि देखिबा alpha particle रो at normal pressure in air it varies from 3 cm to 8 cm depending upon the initial kinetic energy of the particle तापरे प्रॉपर्टी देखबा एबे बीटा रे रो बीटा रे होची एक्चुअली हमें कहबा याको एटा होची फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स okay beta ray is quite analogous with electrons only the thing is that इलेक्ट्रॉन रेस्ट रे भी थाई पारे मूव भी करि पारे बीटा रे कहले हमें एटा होची मूव केवल करूची फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रेस्ट बीटा रे बोली किछि समति नाही ओके सो वेलोसिटी ए बीटा रे रो रेंज करूची 33% to 99.8% of the velocity of light बा 0.33 c okay 0.33 c to 0.998 c okay c माने एटी velocity of light अच्छा they can produce ionization in a gas but their ionizing power is 1/100 of that of your alpha particle and they have penetration power which is very much greater than alpha particles they can affect the photographic plate
and can produce fluorescence in material again like zinc sulfide and barium platinocyanide. They can be deflected by electromagnetic fields. Range ରହୁଛି beta particle ର in air several meters ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, and they can produce artificial radioactivity. Coming to the final one, the third particle property ଦେଖିବା ଏବେ gamma ray ର. They are electromagnetic waves actually. Okay, gamma ray କହିଲେ ଏଟା ଆମେ light waves by electromagnetic waves बोलिकी बुझिबा, having velocity equal to the velocity of light माने c. Okay, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? And gamma rays are highly penetrating in nature. They can penetrate 30 centimeter of thick iron. Okay, माने just imagine गोटे iron माने लुहार गोटे तमे piece नेलो ताहार thickness मने करा जाऊ 30 centimeter नउचो. ओके, गोटे लुहार piece still then gamma ray penetrate करिकी पळै जिवो. ओके, that means human body ऊपर gamma ray पड़ले सीधा से कोणा करिकी आर पार को पळै जिवो, right? So their penetrating power is very high, 100 times that of your beta particles. Now they have small ionizing power. Okay, मने रखो penetrating power जेते बेसी हेबो ionizing power सेते कम हेबो. Okay, so they have small ionizing power which is about 1 by 100 of that of your beta particles. They can affect photographic plate. Okay, केतेरा similarity रहुची केतेरा dissimilarity रहुची. Affect करची photographic plate, but however they are not deflected by either electric or magnetic fields, and their wavelength यदि compare करिबा is smaller than that of your X-ray বা রঞ্জন রশ্মি, being about 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 12 meter. They can produce fluorescence in fluorescent materials. Okay, they knock out the electrons, electron को बाहर करिबो from the surface of a metal on which they fall. Okay, so जेमती आमे देखू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो तुम जानिछ, फोटोन बा लाइट जेतेबेले पडुची जनरली गोटे मेटल सरफेस ऊपर गोटे फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऊपर इलेक्ट्रॉन टा बाहर. ओके, सो सिमिलरली गामा पार्टिकल मधु इलेक्ट्रॉन को बाहर करिबारे मेटल सरफेस रो एटा सक्षम. ओके, तापरे गामा रे कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट in the surface which is exposed to them. Then it can produce nuclear reaction, and in hospital actually gamma ray use करा हुए for the radiotherapy purpose. कैंसर ट्रीटमेंट तुम जानिछ सेटा होची रेडियोथेरेपी रे भी हेई थाए. ओके, सेई केस रे गामा रे को यूज करा हेई थाए. ओके, ताले आमे देखिला जे अल्फा रे होची पॉजिटिवली चार्ज, बीटा रे होची नेगेटिवली चार्ज, गामा रे हला न्यूट्रल. जदि ए सब प्रॉपर्टी को गोटे टेबल रे तुमको क्वेश्चन रे कहला जे लेख बोली कि ताले यू कैन आल्सो कंपेयर. देखो इट इज आमे फर्स्ट लिखिला प्रॉपर्टी, देन द थ्री रेज अल्फा बीटा एंड गामा. फर्स्ट हला नेचर, एटा होची डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, एटा होची फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एटा होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फोटोन बोली मध्य याको कहि पारो. देन चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, एटा होची पॉजिटिव दैट इज +2e, एटा नेगेटिव दैट इज -e, नो चार्ज. ओके, एटा चार्जलेस न्यूट्रल दैट इज 0. मैग्नीट्यूड जदि देखिबा हमें चार्ज रो जेतु 2 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सो 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb माने 2 into चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तापरे एटा सेम एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, एठी टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि पिला माने, एटा दिस शुड बी 19 not 31. ओके, आई विल एडिट दिस. तापरे एटा होची ऑब्वियसली 0. ओके, यार किछि मैग्नीट्यूड नाही चार्ज रो. मास जदि देखिबा 6.6 into 10 to the power minus 27 kg केमती आसिला. सिंपली 4 को मल्टीप्लाई कर दो. देखो हीलियम रे तुम जदि देखिबो चारिटा पार्टिकल अछि हीलियम न्यूक्लियस रे, दुईटा प्रोटॉन दुईटा न्यूट्रॉन, नियरली इक्वल मास जदि हम निजबा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg ताले देखिबो एतिकी फिगर आसीबो. ओके, तापरे यार मास हला सिमिलर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आ एठी रेस्ट मास यार होची 0. वेलोसिटी यार रेंज ऑलरेडी हमें देखिला 1.4 to 2.2 into 10 to the power 7 meter per second. एठी 1% to 99% of the velocity of light, and here this is exactly the velocity of light. ओके, तापरे जदि एठी हमें इफेक्ट देखिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रो, ताले अल्फा और बीटा रे डिफ्लेक्ट होची, गामा रे डिफ्लेक्ट हो नाही. रेंज एठी कवर करूची 2.7 to 8.62 centimeter in air or 1 by 100 millimeter of aluminum in case of alpha ray. तापरे एठी बीटा रे पाई 5 mm of aluminum or 1 mm of lead. तापरे
गामा रे रे वेरी स्ट्रंग रेंज रोचे 30 सेंटीमीटर ऑफ आयरन ओके पेनिट्रेटिंग पावर एठी मिनिमम एठी 100 टाइम्स ऑफ अल्फा रे बा मॉडरेट होई पारो एठी वेरी हाई 1000 टाइम्स ऑफ बीटा रे ओके तापरे आयोनाइजिंग पावर एठी मैक्सिमम एठी लेस एठी पूरा मिनिमम ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी Thank you.